Hi everybody. So this is one of the best books I have read on health, wealth and happiness. ये होची द आल्मानाक ऑफ नाभाल रविकांत. एबे नाभाल रविकांत किए ना से होचंती जणे एंटरप्रेन्योर, जणे एंजल इन्वेस्टर, जणे बिजनेसमैन एंड जहार विजडम पाई, जहार इनसाइटफुल प्रैक्टिकल फिलोसफी पाई से वर्ल्ड वाइड पॉपुलर. केवल इंडिया रे नुह वर्ल्ड वाइड से बहुत फेमस. तो एई बुक रे 5टी सेक्शन अछि जेउ थरे कि वेल्थ, जजमेंट, हैप्पीनेस, हेल्थ एवं फिलोसफी विषय रे डिस्कस करा जाय छी. तो ईच एंड एवरी सेक्शन रो किछटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंट कोट सब आम ये समरी हिसाब से देखा एवं जहाँ सब इनसाइट अच्छी, जहाँ सब नॉलेज अच्छी मुझे डिस्कस करी, प्रैक्टिकल कोट गुड़ा अच्छी से गुड़ा डिस्कस करी. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी नो हाउ कैन आई इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियो. लेट्स बिगिन. One of the many important questions that has been discussed in this book is what is the difference between wealth and money? Money is how we transfer wealth. Money is social credits. It is the ability to have credits and debits of other people's time. Right? But wealth is something different. Wealth is assets that earn while you sleep. आपण सोईथिबा बेले जो एसेट गुड़ा आपण को पैसा कमे की दिए ताको आमे वेल्थ कहि थाउ. एंड द ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बी वेल्दी. आमे वेल्दी केमिति हेबा, आमे केमिति बहुत गुड़ाई एसेट्स एकजुट करबा, एकाठी करबा जे आमे सोईथिले मध्ये आमे काम न कले मध्ये आमे इनकम करि परिबा. हाउ टू बी वेल्दी. Society will pay you for creating things it wants, but society does not know yet how to create those things, because if it did, they will not need you. They would already be stamped out. And if you want to be wealthy, you want to figure out which one of those things you can provide for society that it does not know how to get, but it will want, and providing it is natural to you within your skill set and within your capabilities. And once you figure out that this is the thing you want to provide to the society, you have to produce it or scale it in a large amount, not once, not twice, in a large amount, not in hundreds or thousands, in millions and billions of things, so that every one of the society can have one and you will be wealthy. One of the key words of this book is specific knowledge. What is specific knowledge? Specific knowledge is something that comes naturally to you. Specific knowledge is found much more by pursuing your innate talents, your genuine curiosity, and your passion. It is not by going to school for whatever is the hottest job. It is not by going into whatever field investors say is the hottest. It is found by pursuing your own natural intellectual curiosity. किछिटा स्किल थाए जहाँकि आमको बहुत नेचुराली आसे, से आमको एफर्ट देवाक पड़े ना. जमीक मोर जन सांग अच्छा, सी इज सो गुड एट गसिप. ताकू गसिप करवा बहुत भल लगे कि कौन सी जिनस देखला पर ताकू डिस्क्राइब करवाटा बहुत भल लगे एवं लिसनर को भी बहुत इजी लगे शुणापी. सो सी कैन बी ए गुड जर्नालीस्ट कि गोटे इनसीडेंट देखला पर ताकू ऑटोमेटिकली माइंड रे प्रोसेस करिकी सी कैन प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी कंटेंट किंबा से कंटेंट क्रिएटर बहुत भल हो पार. इट इज हर स्पेसिफिक नॉलेज. आई लव रीडिंग, आई लव क्रिएटिंग थिंग्स. तो जदि मु बुक पर कंटेंट बनैबी देन दैट मे बी ए हिट. दैट इज स्पेसिफिक नॉलेज टू मी. एवं जदि तुम फाउंड कल कि दिस इज योर स्पेसिफिक नॉलेज, दिस इज द फील्ड यू वांट टू वर्क, यू हैव टू गिव योर 100%. इफ यू आर नॉट 100% into it, somebody else who is 100% into it will outperform you. And they will not just outperform you by a little bit, they will outperform you by a lot. That is why be obsessed with your work and no one can stop you from being successful. Another very interesting concept of this book is compound interest.
से कहते कि कंपाउंड इंटरेस्ट केवल फाइनेंस रे काम दिएनी, यह आपणकर डे टू डे लाइफ रे, आपणक एम्बिशन रे, आपणक लॉन्ग टर्म गोल रे मध्य काम दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए वेरी पावरफुल concept. Compound interest applies to more than just compounding capital. It also happens in your reputation. If you have a sterling reputation and you keep building it for decades upon decades, people will notice. Your reputation will literally end up being thousands or tens of thousands of times more valuable than somebody else who was very talented but is not keeping the compound interest in reputation going. When you find the right thing to do, when you find the right people to work with, invest deeply. Sticking with it for decades is really how you make the big returns in your relationships and in your money. So, compound interest is very, very important. Value your time. गोटे बुक रे पढ़ी टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट. Value it. Respect the time you have given on the earth. Don't waste it. It is going to value you more than you value yourself. You just have to set a very high personal hourly rate and you have to stick to it. First you decide कि what is the value of your time. Then जानो कि तमे next जो कामटा करबा को जाउ छ, is it worth it or not. जदि तुमको सेतिक अमाउंट रे से पे करूनी, then just skip that work or delegate it, but don't invest your time. Let's talk about retirement. What is the definition of retirement for you? बहुत जन कहे कि 60 पर किसी करार ना, फैमिली बर्डन ना, फाइनेंशियली किसी निज उपर लिएबिलिटी ना, एंड यू जस्ट टेक रेस्ट. ये हूँ रिटायरमेंट. बट बुक रे आउ किसी डिस्क्राइब करा जायछि. Retirement is when you stop sacrificing today for an imaginary tomorrow. When today is complete in and of itself, you are retired. Retirement केमिति तमे जल्दी पाई पारिबो. One way is to have so much money saved that your passive income covers your burn rate. ते टंका जमा करदेव जे गोटे टाइम पर तुमको किसी काम न कले भी जहाँ इंटरेस्ट आसूब जहाँ पासिव इनकम आसूब से सेविंग रु से तुमर दिन गुजार हो. सेकेंड इज यू जस्ट ड्राइव योर बर्न रेट डाउन टू जीरो. यू बिकम ए मंक. किसी खर्च ही करना, जस्ट एवरी सिंगल मटेरियल थिंग को अबंडन करदेव. देन ऑब्वियसली यू विल गेट रिटायर्ड. एंड ए थर्ड इज एमती किसी काम कर जहाँ को तुम काम करला भाई तुमको लगे ना. इट विल बी लाइक ए प्ले टू यू. And that is how you are not going to work. You are just playing a long term game, and that is how you can declare yourself retired, because you are not working, you are playing. So there are multiple ways to retirement. What is happiness to you? According to Naval, it is a default state. Happiness is there when you remove the sense of something missing in your life. It is about the absence of desire, especially that absence of desire for external things. One of the key concepts of this book is that happiness is a skill. Happiness is not something you inherited or even choose, but a highly personal skill that can be learned, like fitness और न्यूट्रिशन. बहुत टाइम आपड़ एमती पर्सन सह एनकाउंटर करेंगे कि जो मैंने कि सब बेले खुशी था कि भी हो जाओ लाइफ रे स्टिल दे आर हैप्पी. एटलिस्ट से बाहर को सहीटा देखते कि दे आर हैप्पी. एवं आउ किसी जन था जो मैंने कि बहुत रिच थे, बहुत हेल्दी थे, बट स्टिल दे आर अनहैप्पी. बट रियलिटी है हैप्पीनेस इज ए स्किल. इट इज इंटरनल. देयर इज नथिंग टू डू विथ द आउटसाइड एनवायरनमेंट विथ योर हैप्पीनेस. The most common mistake of humanity is believing that you are going to be made happy because of some external circumstances. Oh, I will be happy when I get that thing. That is the fundamental mistake we all make 24/7 all day long. This is completely delusional.
Happiness is internal, it is a skill. You have to go through your life replacing your thoughtless bad habits with good ones, asking a commitment to be a happier person. At the end of the day, you are a combination of your habits and the person you spend most time with. That is why it says choose your person carefully, choose your friends carefully, because they represent you, jealousy and envy. बहुत टाइम आम एमती लोक सह मीट करूँ जहाँपाई आमको फील हुए कि काश से पर्सनालीटी आमर था, काश मुझे गुड लुकिंग होता कि काश मोर से माइंडसेट था कि मुझे रिच होता। बहुत टाइम सेमती फील हुए एवं आम सैड फील करें, दुखित होता एवं आमको लगे कि आम पाखे किसी भी ना। वी से वी वांट हिज पर्सनालीटी, हिज बॉडी, हिज मनी एक्सेट्रा, बट डू यू वांट टू एक्चुअली बी दैट पर्सन with all of their reactions, their desires, their family, their happiness level, their outlook on life? If you are not willing to do a wholesale 24/7 100% swap with who that person is, there is no point of being jealous for that person. Just read it one more time. से पर्सन जहाँ भी दुख अच्छी, से पर्सन जहाँ भी डिजायर अच्छी, से पर्सन रिएक्शन जमी थाए, से पर्सन पर्सनालीटी जमी, डू यू वांट टू स्वैप एवरीथिंग विथ दैट पर्सन? डू यू वांट टू लिव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन? से जी हार्डवर्क कर, डेडिकेशन अच्छी, जी डिसिप्लिन अच्छी, डू यू वांट ऑल ऑफ दिस? जदि तुम कंप्लीटली स्वैप करने को चाहून, देन देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग जेलस विथ एनी पर्सन. द रियलिटी इज life is a single player game. You are born alone, you are going to die alone. All of your interpretation are alone, all your memories are alone. You are gone in 3 generations and nobody cares. Before you showed up, nobody cared. It is all a single player game. So there is no competition, there is no jealousy, no envious, nothing. One of the secret of finding happiness, as described in this book, is acceptance. We think of ourselves as fixed and the world as malleable. But it is really we who are malleable and the world is largely fixed. In any situation, we have 3 options. First, you can change it, you can accept it, or you can leave it. What is not a good option is to sit around wishing you could change it but not changing it, wishing you could leave it but not leaving it, and worse is not accepting it. Happiness in acceptance. If you can't change it, if you can't leave it, the simplest way to be happy is to accept it the way it is, rather than complaining about it. Just accept it. Now the question is, how can we accept things as they are? And the answer is embracing death. Death is the most important thing that is going to happen to us. When you look at your death and you acknowledge it, rather than running away from it, it will bring great meaning to your life. Your life is a firefly blink in a night. You are here for such a brief period of time. You are going to die one day, and none of this is going to matter. So enjoy yourself. Do something positive. Project some love. Make someone happy. Laugh a little bit. Appreciate the moment and do your work. That is the secret to happiness. Wisdom is knowing the long-term consequences of your action and then making the right decision to capitalize on that. एबे ठीक डिसीजन केमिति नेबा? तो बुक रे किछटा चीट कोड दिया जाय छै जहा द्वारा कि हमकु इजी हेबो ठीक डिसीजन नेबा पई. सेथि मध्यरु गोटे होसी इन्वर्जन. It says, I don't believe I have the ability to say what is going to work. Rather,
I try to eliminate what is not going to work. It is not about having correct judgment, it is about avoiding incorrect judgment. जदि बहुत सारा ऑप्शन अच्छी एवं सेथि मध्यरे तुमको ठीक डिसीजन नेबार अच्छी देन द क्विकेस्ट वे इज टू एलिमिनेट जोटा तुमको ठीक लागू ना जोटा तुमको 40 to 50% कि ताठू कम ठीक लगुच जस्ट इमिडिएटली एलिमिनेट सो दैट कि जोटा बेटर ऑप्शन अच्छी जोटा तुम मे भी ठीक ऑप्शन अच्छी ताहा ऊपर तुम इन्वेस्ट कर पारिबो ताहा ऊपर एफर्ट दे पारिबो एवं ताकू तुम लॉन्ग टर्म भाव में नहीं कि ठीक डिसीजन नहीं कि ताकू कैपिटलाइज कर पारिबो. That is the quickest way to take the right decision because decision making is everything. Another important lesson of this book is to not to have a stubborn personality. आपण लाइफ रे बहुत जन को मीट करेंगे जो माने कि कहे ओ लुक दिस इज द वे आई एम यू शुड एडाप्ट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज बट बुक रे कहा जाइए इट इज रॉन्ग टू ए सर्टेन पॉइंट. इट सेज इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू अनकंडीशन योरसेल्फ, to be able to take your habits apart and say, okay, this is a habit I probably picked up when I was a toddler, trying to get my parents' attention. But now that I have grown up, I need to abandon this habit and replace it with some good habits. That is the personality of a wise, mature person. Facebook redesigns, Twitter redesigns, personalities, career and teams also need redesigns. There is no permanent solutions in a dynamic system. This is important. Naval says, my number one priority in life, above my happiness, my family, above my work, is my own health. It starts with my physical health, second is my mental health, and third is my spiritual health. Then it is my family's health. After that, it is my family's well-being. After then, I can go and do whatever I want to do with the world. But my first priority is my own health. How powerful it is. जदि आपण भल फील करू नथिबे ऑब्वियसली यू कांट कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स यू कांट फोकस. तो जदि प्रोडक्टिव हेबाकू चाहूँ जदि बेसी काम करबाकू चाहूँ देन फर्स्ट थिंग होची कि आपण निजर हेल्थ रो केयर रखंतु. देयर इज अ सेइंग दैट सेज यू हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स until you have one health problem, then you have only one health problem. That's it. एवं यही बही रे मध्य बहुत सुंदर कोट उठा अछि that is to have a peace of mind you have to have peace of body first. So take care of yourself. Health starts with diet. Diet विषय रे नाभाल कहती the more processed the food the less one should consume. बट आमे एमिति इन्फ्लुएंस्ड हो सारी जे आमको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दैट इज चिप्स बिस्किट्स पिज्जा कोक आदि सब बहुत अनहेल्दी फूड खाइबा नॉर्मल लगे. बट जितेबाला आमे देखू समवन इज हैविंग ए फ्रूट सैलड स्प्राउट्स डाल वी फील लाइक सी इज ऑन डाइट और सी इज ट्राइंग टू लूज सम वेट. बट रियलिटी होची फ्रूट सैलड डाल आदि खाइबा होची नॉर्मल. दीज आर क्लीन फूड दीज आर एक्चुअली फूड जोटा आम कंज्यूम करवा कथा आम डेली लाइफ रे एवं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाइबा अबनॉर्मल हेबा उचित. एवं यही अबनॉर्मालिटी चेंज हेबा दरकार आम माइंडसेट रे एंड आम सोसाइटी रे. एक्सरसाइज विषय रे नाभाल कहती यही हैबिटा मोस्ट पॉजिटिवली तांको लाइफ को इम्पैक्ट करछि. व्हाट हैबिट वुड यू से मोस्ट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स योर लाइफ. से कहितले द डेली मॉर्निंग वर्कआउट. That has been a complete game changer. It has made me feel healthier and younger. It has made me not to go out late. पुणी से कहते कि I don't start my day until I have worked out. I don't care if the world is exploding and melting. It can wait another 30 minutes until I am done working out. माने देखंतु वर्कआउट टा कितने इम्पोर्टेंट तांको पाई जे जदि पृथ्वी प्रलय आसी जाए देन ऑल्सो से कहबी कि wait for 30 minutes then I will come and save the world. से तो गला फिजिकल हेल्थ पाई. मेंटल हेल्थ को केयर नबा पाई नाभाल रविकांत मेडिटेशन ऊपर बहुत एम्फासाइज देइछंती. से कहिसंती
Meditation is intermittent fasting for the mind. Too much sugar leads to a heavy body, and too many distractions lead to a heavy mind. Time spent undistracted and alone in self-examination, journaling, meditation results the unresolved and takes us from mentally fat to fit. Meditation by se recommend karichanti. I recommend meditating 1 hour each morning because anything less is not enough to really get deep into it. After taking care of your physical health, diet, exercise, mental health, we should choose to build ourselves. One of the beautiful quotes of this book is, the greatest superpower is the ability to change yourself. ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି କି life is going to play out the way it is going to play out. There will be some good and some bad. Most of it is actually just up to your interpretation. You are born, you have a set of sensory experience, and then you die. How you choose to interpret those experiences is up to you, and different people interpret them in different ways. The hardest thing is not doing what you want. It is knowing what you want. जदि तुम जानिछ कि कौ डेस्टिनेशन को तुमको जिबार अछि, then it is easy to make a plan, act on it. But if you don't know actually तुमको कोठी जिबार अछि, actually तुम कौन चाहुछ, then it is very very difficult to choose your path. Thank you for watching this video till this end. But गोटिए स्मॉल सजेशन मु कहबी किंबा रिक्वेस्ट मु करिबी, कोनोसी भी बुक रो आपण जत्ते भी समरी देखंतु, जत्ते भी वीडियो देखंतु किंबा जत्ते भी जिस्ट पढ़ंतु, that will never be equivalent to actually reading a book. आपण गोटे बुक पढ़िले जेतिकी जिनिस शिखि पारिबे, जेतिकी नॉलेज आपण गेन करिवे, केते भी अमाउंट रो समरी जिस्ट किंबा ऑडियो बुक सुनिले मध्ये सेतिकी आपण शिखि पारिबे नाही एवं इम्प्लीमेंट करि पारिबे नाही. तेणु गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट कि आपण समरी देखंतु, जिस्ट देखंतु, नो इश्यू. किंतु जदि आपन को लागुछि कि हाँ ए बुक रे किछि नॉलेजियस अछि, किछि इंपोर्टेंट अछि, किछि शिखिबार अछि, देन बाय द बुक एंड रीड. 200-300 टका पड़िबो, बट जेतिकी वैल्यू देबो, लाइफ चेंजिंग नॉलेज सब देबो, जस्ट वर्थ एवरी सिंगल पेनी. थैंक यू.